So hi guys, today we'll be solving some miscellaneous problems from the concepts we've learned so far. Okay, I mean very less number of problems, but some good number. Okay, I mean good quality questions. Let's try and solve. Okay, one by one. So the first question, if we take up, let's start with cutting of spring and string, right? So if I take a simple arrangement, so ये एक spring दिया हुआ है and this is thrice m and there is a string connected to a mass m. Okay. Now if I cut this string, what will be the acceleration of these blocks A1 and A2? So what is the technique to solve? Always, like I told you in the class, in the lecture series, always you have to make the FBD of the blocks before cutting, right? So before cutting, if I try and make the FBDs, a block of mass m का FBD जो होगा ऊपर टेंशन T होगा, नीचे mg होगा, right? And twice m का जो FBD होगा ऊपर kx, like there are no multiple strings, so I'll just keep it as kx simply. And नीचे सर 3mz लग रहा है, 3mz, और नीचे tension tv लगेगा. So this is the FBD of two bodies. So from here, if we try and figure out, tension t comes out to be from this FBD, tension t comes out to be mz, and from the second FBD we have an equation where kx would be equal to t plus mg. Sorry, thrice mg, right? Okay. Now from here we can make out कि kx का value जो आ रहा है, t का value mg put करो, that comes out to be 4 mg. From this is equation 1. Let's just sum it up. And then if we cut this string, what will happen to the accelerations of the block, है ना? तो अगर मैं A1 and A2, अगर मैं इस string को काट दूं, ये logical बात है कि जो block of mass m है, it will simply experience a free fall, right? Because it will simply fall down with an acceleration of gravity, right? So इसका जो A2 आने वाला है, that A2 would be nothing but small g, है ना? Acceleration due to gravity. Why? Because a string को काटने से it directly adjusts itself according to its new equilibrium condition, right? So acceleration due to gravity. So that's the concept. So it will experience a free fall, right? So A2 का value जो होगा वो g होगा. Now if I try and find out the value of A1, तो अगर A1 का value मैं लिखूं, इस पे लगने वाला Fnet क्या है सर? तो suppose after cutting this block of mass m falls downward, and मैंने ऐसा assume किया है कि this thrice m will move upward, right? Will move upward with an acceleration A1. So from there, if I try and make out, तो kx would be equal to, है ना? Kx would be equal to, I mean, if I write an equation from here, so it should be minus t plus thrice mz. सही है? Thrice mz should be equal to thrice ma. सही है? Okay. Now kx minus t minus thrice mz, that comes out to be thrice ma. So from here, if I see, if I cut this string, tension t comes out to be 0, so that tension t comes out to be directly 0. Now from here, what I can figure out is that answer जो होगा यहाँ का kx का value already we found out from the equation 1, then I can directly put 4mz minus thrice mz should be equal to thrice ma. So from here, if I see, then 4mz minus thrice mz gives me mz, that would be thrice ma. So from here, got cancelled out, so answer A would be z by 3. Such a beautiful answer, right? So I've got the values of A1 and A2. So this cutting of spring and cutting of string are so important as far as your NEET and JEE mains is concerned, right? Okay, now let's move on to the next question. Let's solve a problem from, using a spring balance, all right? Okay, now if I see there is a block of mass m 5 kg, okay? Now this spring balance, it's a spring balance, okay? Now here there is a block of 10 kg mass is attached. 10 kg mass, okay? 10 kg mass, okay? Now what we'll have to find out? We'll have to find out the values of their acceleration, right? Values of 5 kg and 10 kg mass ka acceleration value we'll have to find out, right? Okay, anyways, now before writing anything, what is our duty? Our duty is to find out or draw the FBD of the individual blocks, all right? So if I try and draw the FBD of the individual blocks, now if I try and use my common sense a little bit, so if I disturb this system a little bit, then it will be it's evident from the given masses that this block will move downward some acceleration, and with
the same acceleration, this block of 5 kg mass will also move upward, right? From the concept of constraint. Okay, तो definitely इसका ज़्यादा weight है, so definitely ये system जो है इस तरफ move करेगा, है ना? So नीचे की तरफ. So after writing the directions, after giving the directions of acceleration, now it's my duty to draw the FBDs of the individual blocks, right? Individual blocks. ये 5 kg है, ऊपर की तरफ टेंशन T है, नीचे 5G है, और ऊपर एक्सेलरेशन A से जा रहा है. दिस इज द एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक. एंड 10 kg ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं, दैट कम्स आउट टू बी टेंशन T अपवर्ड, 10G downward, and acceleration A downward, right? So from there, if I try and write the equation, I mean from this FBD, if I try and write the equation comes out to be tension T being in the same direction as acceleration, that would be taken as positive, and T minus phi Z being in the opposite direction of acceleration will be taken as negative, so it would be equal to 5A. This is equation 1. All right. Now from this particular arrangement, what I get is 10G is in the direction of acceleration, so 10G would be taken as positive. Tension is in the opposite direction of acceleration, so negative should be equal to 10A. This is equation 2. All right. So from there, what I can figure out is that okay, now these are the two equations I got, and then now see, यहाँ पर टेंशन का वैल्यू कितना आ रहा है? टेंशन का वैल्यू आ रहा है सर 5A plus 5Z, right? This is equation 1. Now from here also I can find out one tension value that comes out to be from equation 2. Tension value आ रहा है सर 10Z minus 10A. All right. So you can equate these two equations, of course. Now 5A plus 5Z should be equal to 10Z minus 10A. Now from here, what will I get the acceleration values to be? Sir, acceleration का value निकल के आएगा 10A इधर लेके आओ, that would be 15A. Now 10Z minus 5Z, that would be 5Z. So 15A 5Z, then acceleration comes out to be 3, that is G by 3. All right. So I've got the value of acceleration to be G by 3. Now, if I have the acceleration value, then definitely I can find out the reading of this spring balance. Then I can definitely find out the reading of this spring balance, put the value of this acceleration in either of the equation, then you can find out the value of tension. Now, tension का value क्या निकल के आता है? 5Z should be equal to 5 into A, that is G by 3. Now that comes out to be tension T comes out to be 5Z by 3 plus 5Z. That comes out to be 5Z plus 3 5s 15G, that is 20G by 3. Now from here, if I found out the value, tension T comes out to be 20G by 3. Now, reading of the spring balance is nothing but T by G. So that would be given by 20G by 3 into G. G got cancelled out. Answer would be 20 by 3 Newton. All right. Okay. Now that's the tension as far as the question is concerned. Spring balance का reading भी आ गया और दो blocks का acceleration भी आ गया. Okay. That's it. Now, if these masses would have been identical, now the kind of illustration that I used in the class, it was in that illustration, in that particular problem, I took the masses to be same. So definitely you can find out the acceleration, you can find out the T value by simply resolving any of the block, because if the masses are identical in the sense if the masses are same, now this system cannot be disturbed or this system won't move in either of the direction. All right. So if the blocks won't move, then there won't be acceleration in the system. If there won't be acceleration, if there won't be any acceleration in the system, then definitely you don't have to consider all these equations. You can simply use the concept of equilibrium and find out the value of tension T from the given diagram. All right. Okay. Now let's move on to the next problem. Now we have let's take a massive rope. Whatever I taught in the class, I'll be just taking up illustrations based on the concepts that we learned in the class, and you'll be getting practice problems or the revision questions of this particular chapter after the completion of the friction as well. So now we'll try and cover up whatever we have learned till the date. Now, if I take an example of a massive rope where there are two masses involved, suppose this is 2 kg mass and there is a massive rope and नीचे 4 kg मास है, इस रोप का मास है 4 kg, लेंथ है 4 मीटर. So by using the unitary method you can always find out कि कौन सा लेंथ में कितना लेंथ तक कितना मास है. You can always find out the technique that I've used in the concept video. All right. So the force acting is suppose F. Okay. Now if I find out the values, I mean applied force, let me take it as 150 Newton. Okay. Now you'll have to find out the ratio. Okay. Ratio of tensions at points A
and B. So at point A and at point B. All right. So this is point A, this is point B. So these are the 2 points where you'll have to find out the tensions and the ratio of the tension at points A and B. Okay. Now let's first say sir, same procedure everywhere, like in physics the most important part is drawing the FBD. Now if you can just figure out the FBD from the question, you can always I mean like you can get the answer easy, or it will become very easy for us to reach the answer. All right. So now if I see from the let me take any point first. Let me consider point A first. All right. Okay. Now point A, at this point A, what is the force acting? Now suppose this is 4 kg and this is 4 kg. Before finding tension at A, let me what is the first step, sir? First step, यहाँ पर applied force है तो definitely acceleration आएगा. So if there won't be any applied force, acceleration find out करने का कोई जरूरी नहीं है. But then again, in this particular problem, there is an external force acting on the system, and if there is an external force acting on the system, always the first step is to find out the acceleration. All right. So acceleration निकालते हैं. कैसे निकालते हैं सर? इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल मास ले लो by adding up the masses. All right. So what is the way of adding up masses? So 2 plus 4 plus 4, that comes out to be 10 kg. All right. So इस 10 kg ब्लॉक पे, इस 10 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स F है. सर नीचे क्या है सर? Definitely 10g would be acting downward, and since the applied force is in the upward direction, acceleration would be upward in the upward direction as well. So from this given FBD, what we can find out is F minus 10g should be equal to 10a. Now applied force is 150 minus 10g is nothing but 100, so that would be 10a. So acceleration comes out to be, sir, 50, 10a, that is 5 meter per second square. All right. So from here I could find out the value of acceleration. Acceleration comes out to be 5 meter per second square. All right. So now my first duty would be to find out the tension at A, right? So for point A, at this point if I see, suppose मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ, यहाँ पर एक 4 kg ब्लॉक था, यहाँ पर सर 4 kg ब्लॉक है, और यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है उस टेंशन का वैल्यू मेरे को निकालना है. So what I'll be doing for this tension, what will be the total mass? इस पूरे सिस्टम को एक मास मान लूंगा, तो इस टेंशन के लिए कितना मास लग रहा है सर? Definitely 8 kg, right? 4 plus 4 is 8 kg. All right. Okay. Now 8g downward, tension T upward, acceleration upward. So tension TA कितना हो जाएगा सर? Tension TA would be from the, if I try and write the equation for this, it would be TA minus 8g should be equal to 8a. So from here, what I can see is tension at A comes out to be 8a plus 8 Z. So A का value 5 है, so 8 5s are 40. All right, so 40 plus 80, that comes out to be 120, right? 120 Newton. Tension at A is 120 Newton. So similarly, point B, अगर मैं B का point block B के लिए अगर मैं निकालूं, सर at point B, what is the total mass that it is experiencing or it is carrying? अगर tension T यहाँ पर जो लग रहा है उसको अगर मैं निकालूं, तो सर it is only carrying a 4 kg mass. So simply उसका जो FBD बनेगा, it would be a simple FBD, that is tension TB पकड़ लो सर, नीचे 4g, क्योंकि यहाँ पर 4 kg mass है, ऊपर acceleration है, because all the points are having a common acceleration A. So from the equation, what we can write is TB minus 4z should be equal to 4a. So from here, what I can write, TB comes out to be 4a plus 4g. Now 4a is nothing but 20 plus 40, that would be 60 Newton. So if I find out the ratio, sir, definitely tension A and tension B का ratio क्या निकल गया था sir? 120 by 60, that is 2 Newton. All right. So 2:1 is the ratio. That's it. Okay. Anyways, it was nice, and just Messi bro problem का भी practice हो गया. Simple concept, right? Okay. Next question. So एक simple question लेते हैं पहले, है ना? तो suppose these are all miscellaneous problem. Easy as well as quite challenging, but not as challenging because we have got our concepts cleared by now. All right. So point ये A है, ये B है, ये क्या है सर? 4 kg ब्लॉक, यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है वो है सर 5 न्यूटन. कितना है सर? 5 न्यूटन. ओके. नाउ व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट? यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन दिस टू ब्लॉक, definitely. All right. And the acceleration of the system. Okay. Now for that, what I'll be doing is I'll be drawing the FBD of the blocks. All right. So FBD तो सर simple FBD निकल के आता है इधर सर 6 kg है,
6 kg है ना, इस तरफ कुछ नॉर्मल रिएक्शन एन ऑन नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी ड्यू, ये ए है, ओके, ऑन ए ड्यू टू बी, है ना, तो और 6 kg block पे नहीं, this normal reaction is acting on B due on A due to B, all right, so I won't be drawing that for 6 kg. For 6 kg what is the force acting on block C? सर ऊपर normal due to ground, नीचे mg due to so ये तो cancel out हो जाता है, so इसको बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो 6 kg block पे लगने वाला सिर्फ एक ही force है, that is normal reaction on 6 kg due to block A, that is 4 kg block, that means ऐसे perpendicular to the surface, all right, so सिर्फ there is one normal reaction acting normal on B due to A, all right, okay, now this is the concept. So 4 kg पे लगने वाला forces क्या क्या है सर, 4 kg पे normal on A due to B and इस direction से sir 5 Newton force is acting, all right, so from here what I can write, what I can find out is the normal reaction N on B due to A का value has 6 Newton. I cannot write that because that would be nothing but 6a. No, you cannot write it as 6 Newton because ये जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है सर, नॉर्मल रिएक्शन ऑन 6 kg ड्यू टू 4 kg इज पुशिंग दिस 6 kg ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ये जो 5 न्यूटन फोर्स है वो इस ब्लॉक पे लग रहा है, ऑलराइट, सो ये ब्लॉक इस ब्लॉक को भी आगे साथ में लेके जाएगा, तो बट इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स कौन सा है सर, देयर इज ओनली वन फोर्स एंड बी ए, दैट इज, सो दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 6 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस 6 kg ब्लॉक, ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स, दैट मींस मेरा फर्स्ट ड्यूटी बनेगा कि आई शुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द सिस्टम, ऑलराइट, तो वैल्यू ऑफ ए कितना होगा. So from here also I can simply write 5 Newton minus, because पूरे system जो है इस direction पे accelerated है, तो 5 Newton would be the 5 Newton is in the same direction as acceleration, so that would be taken as negative, and normal direction is in the opposite direction as acceleration, so that would be taken as negative, and AB should be equal to 4 into A. Now from here what I can find out is this block, इन दोनों ब्लॉक हमेशा सर कांटेक्ट पे रहेगा, हमेशा कांटेक्ट पे रहेगा. अगर इन ये दोनों ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट पे रहेगा उसका मतलब ये है कि दोनों में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शंस इक्वल एंड ऑपोजिट होना पड़ेगा, अदरवाइज दिस blocks will get separated as a result of the net force influence, all right, so ये जो दो opposite forces है, these forces have to be equal in order for the blocks to be moving with the same acceleration. तो ये जो NBA है should be equal to NAB, that is 6 into A should be equal, all right, so NAB के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 minus 6 into A should be equal to 4A. Now from here what I can find out, 5 is equal to 6 plus 4 is 10A, so from here A comes out to be 1 by 2 meter per second square, all right, so acceleration of the system भी निकल गया sir, and normal reaction acting on either of the block would be nothing but 6 into A, that is 6 into 1 by 2, that is 3 Newton, all right, that's it. Okay, thank you so much. Let's move on to the next question. I hope you've understood the simple illustration here. We tried to understand the normal reaction को कैसे निकाला जाता है, and common acceleration we here also knowingly or unknowingly, so the concept of constraint is always used, all right, okay. Now next, if I take a simple illustration where there is a pulley, there is a 6 kg mass, okay, now there is a 7 kg mass, okay. Now from here what you'll have to find out is you'll have to find out the tension T value. What value you'll have to find out, sir? Tension T value, all right, okay. Now how to find out the tension T value, ठीक है, okay. Now इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, देखो टेंशन टी वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आप क्या करो सर, एफबीडी ड्रॉ करो, एफबीडी, ओके, तो टेंशन टी इस तरफ, टेंशन टी इस तरफ सर, 6G इस तरफ, 7G इस तरफ. Now what is the, where is the acceleration of the block, where is the acceleration of the block, where is the acceleration of the block, सर यहाँ पर ये जो 5 kg ब्लॉक है डेफिनेटली ये मैं सब पकड़ रहा हूँ कि ऊपर एक्सेलरेशन ऐसे जा रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पर एक सरफेस बना दूं तो इसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है, सो आई शुड रादर कट दिस, है ना, बिकॉज 7 kg ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे रेस्ट पे आ जाएगा, तो यहाँ पर तो कुछ एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं, सो लेट्स जस्ट कैंसिल आउट दिस पर्टिकुलर सरफेस दैट आई हैव गिवन इन द इक्वेशन, ऑलराइट, सो यहाँ पर
एक्सेलरेशन है, ये यहाँ पर जितना एक्सेलरेशन होगा इस ब्लॉक का भी उतना ही एक्सेलरेशन ऐसे आएगा बिकॉज ऑफ द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट। यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग यूज हो रहा है। ऑलराइट, ओके। यहाँ पर देखो जो इक्वेशन इसका बनेगा दैट वुड बी नथिंग बट टेंशन माइनस 6g शुड बी इक्वल टू 6a, दैट इज इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 बना है कि नहीं? अभी इक्वेशन 2 जो बनेगा वो क्या होगा सर? टेंशन t इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड, 7g इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, सो 7g minus t should be equal to 7a. This is equation 2, है ना? So from by just solving, if we try and figure out, then from here we can see कि sir this tension and this tension will get cancelled out if we add the values. All right, if we add the values, then I think some acceleration value would come out simply, है ना? तो उस पे कोई टेंशन नहीं लेना है। And once you get the acceleration value, you can put the value of that acceleration in either of the equation, then you'll get the tension value. It was such a simple and silly problem, I believe. Okay, anyways, let's move on to the next problem. क्वेश्चन अगर मैं लूं, यहाँ पर मास कुछ भी ले लो सर, मास m, यहाँ पर कुछ मास m, यहाँ पर भी कुछ मास m, और यहाँ पर कुछ टेंशन, कुछ अप्लाइड फोर्स ले लो, ठीक है? अप्लाइड फोर्स ले लो, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ T1 एंड T2। इसको आप बहुत ही आसान, ये T1 ले लो, ये T1, ये सर T2 और ये T2। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम को एक बार सिस्टम मान लो, बिकॉज बाय द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रेंट व्हाट वी नो, क्या ये अगर ब्लॉक कुछ एक्सेलरेशन ऐसे जाएगा, देन दिस ब्लॉक्स मस्ट बी मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, अदरवाइज दिस स्ट्रिंग विल स्लैक एंड दिस स्ट्रिंग इज नॉट सपोज्ड टू स्लैक। ऑलराइट, तो ये पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे आगे जाएगा, तो उस एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा सर? उस एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा F is equals to thrice ma, that would be F by thrice m. All right, okay. Now मुझे क्या चाहिए सर? T1 and T2 का वैल्यू। पहले तो T2 का वैल्यू निकाल लेते हैं सर। T2 would be nothing but m into acceleration, because उस ब्लॉक ऑफ मास, जो लास्ट वाला ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे लगने वाला सिर्फ एक ही फोर्स T2 है, and this T2 must be pulling this block of mass m forward, otherwise there is no any external force acting on this block of mass m for it to move forward. All right, but इस पूरे सिस्टम के साथ इस ब्लॉक को भी आगे जाना है, और इसको आगे लेके जाने वाला फोर्स ही क्या है सर? टेंशन T है। तो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है सर? F by thrice m, so mm got cancelled out, आंसर आया F by 3। नाउ ये T2 का वैल्यू है, T1 का वैल्यू कितना होगा सर? इफ आई ट्राई एंड ड्रॉ द FBD of this block of mass m, then it comes out to be tension T1 backward, F forward, acceleration in this direction, so that would be F minus tension T1 should be equal to ma। so T1 का वैल्यू निकल के आता है सर F minus ma। ऑलराइट, ओके, F minus ma। यहाँ पर F minus ma का वैल्यू क्या है सर? m into F by thrice m, so 3 got cancelled out, आंसर आया thrice F minus F, that is twice F by 3। तो if I find out the simple ratio, T1 का वैल्यू आया सर twice F by 3, T2 का रेशियो आया सर कितना? F by 3। now 3 got cancelled out, FF got cancelled out, आंसर आया 2:1, that's it। all right, okay, simple as that। it was such a silly problem, I believe। okay, anyways, I know you can solve all these things, but it's very important for you to practice such problems in order to be able to solve the problems coming in mains and NEET। advanced level का problems हम लोग करेंगे। I'll take a different series out for advanced series, advanced questions only। okay, anyways, let's move on to the next question। okay, now if we see, there is one question here। now let's take up यहाँ पर एक पुली दिया हुआ है सर, ब्लॉक ऑफ मास m है इधर। okay, now यहाँ पर एक आप ले लो सर, है ना? okay, now let's take it up like this। यहाँ पर 60-degree angle। now there is a gut, there is a gut in it, a knot in it, and there is a 6 kg block here। okay, now okay, that's it। now this angle is given as 60। now you're supposed to find out the mass of this block। okay, question कुछ अलग तरीके का दिया गया है सर, mass of this block हमको निकालना है। okay, anyways, let's solve। it's easy, पूरे सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम पे है, so it becomes very easy for us to solve। all right, okay, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो क्या होगा सर? T should be equal to mg। all right, T should be equal to mg। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर जो टेंशन लगेगा इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है वो उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो सर आप, क्या पकड़ लो सर? T1 पकड़ लो, है ना? तो यहाँ पर सर आप T2 पकड़ लो,
इसको रिजॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको T2 पकड़ लेते हैं, इसको T1 पकड़ लेते हैं। इस T2 को मैं पहले रिजॉल्व करता हूं सर। यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हुआ। ऑलराइट, सो ये हो गया सर T2 cos 60 और ये हो गया सर T2 sin 60। ऑलराइट, T2 cos 60, T2 sin 60। यहाँ पर if I try and have a look, and यहाँ पर अगर मैं T2 sin 60 लूं, then again what I'll have to do is I'll have to consider, I think this is T2 I have considered, this is T1, and यहाँ पर भी मैं T3 consider कर ही लेता हूँ because there is a गांठ in it. So if I just calculate, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, फिर से this is 60, this is 60 as well, तो यहाँ पर क्या हो गया सर T3 cos 60 and it जो upward होगा वो T3 sin 60 हो जाएगा। ऑलराइट, सो एंड हियर नीचे क्या लग रहा है सर, T1 लग रहा है, एंड T1 is nothing but 6G। ऑलराइट, फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट आई हैव, T1 is equals to 6G, और इन दिस गांठ नीचे लगने वाला फोर्स, ये गांठ का नीचे जो है ऊपर की तरफ क्या लग रहा है सर, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ऊपर की तरफ T1 लग रहा है और इस गांठ के नीचे क्या लग रहा है सर, T1 लग रहा है, और इस T1 के वजह से 6G is always downward, so T1 का वैल्यू क्या होगा, 6G होगा। सो इस गांठ पे लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है, F net। नाउ दिस T3 cos 60 and T2 cos 60 will get cancelled out simply. What will be the values that will remain is T2 sin 60 plus T3 sin 60। all right, so T2 sin 60, T3 sin 60, गांठ के ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्सेस है और नीचे T1। all right, okay, now T1 का values I already know, so from the concept of equilibrium what I can use is T2 cos 60, sorry, T2 sin 60, all right, T2 sin 60 plus T3 sin 60 should be equal to 6G। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आता है सर, 2, यहाँ पर T2 एंड T3 बोथ आर सेम। कैसे पता चलेगा सेम बोल के सर, T2 cos 60 and T3 cos 60 and T2 cos 60 both are same, मतलब इक्विलिब्रियम में है, सो बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, है कि नहीं, बोथ अगर इक्विलिब्रियम में है बोथ द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इक्वल एंड ऑपोजिट अगर है T3 cos 60 must be equal to T2 cos 60। all right, तो यहाँ पर definitely from the concept I can see is that T3 by T2 comes out to be cos 60 by cos 60, that is 1, so T3 comes out to be T2। so from here what I can see is T2 and T3 both are same, so यहाँ पर मैं directly 2T2 sin 60 लिख ही सकता हूँ without any problem। all right, so 2T2 sin 60 का वैल्यू कितना आता है सर, definitely I know √3/2, so 2 got cancelled out, ये आया 6G। so यहाँ से T2 का वैल्यू निकल के आता है सर 6G by √3, okay, so that is 60 by √3, so this is T2 value। all right, ये क्या है सर, T2 value। okay, anyways that's it। okay, now if I have the T2 value from here, what I can calculate is 60 by √3, 60 by √3, so what would be the value of 60 by √3? now T2 का वैल्यू है आपके पास कि सर ये T2 60 by √3 है, so from there what I can figure out is directly I can equate 60 by √3 with the 6G। all right, if I can equate, no, I don't think I can equate that with 6G, no, I have to find out the block of mass M, right, or this mass I have to find out। okay, यहाँ पर लगने वाला forces tension जो था वो T2 था, T2 and T3 both are same, so either way I can take, even if I consider it to be T3, answer would be same। so यहाँ पर T3 लग रहा था, T3 T2 both are same है, T2 का वैल्यू अगर 60 by √3 है तो T3 का भी वैल्यू 60 by √3 होने वाला है। so from here what I can figure out is T3 is equals to mg। so T3 का वैल्यू कितना है सर, 60 by √3 be equal to mass into g। so mass का वैल्यू क्या निकल के आता है सर, 60 by √3 into 10, so 6 by √3, that's it। ओके, तो अगर 6 by √3 है तो मास क्या हो जाएगा, 2 into √3 into √3 by √3 got cancelled out, so आंसर आएगा सर √3 into 2, that's it। okay, so that's how you find out। it was a relatively good problem, it was relatively a good problem I believe। okay, तो anyways तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर। यहाँ पर पुली है, 2 kg है ना,
पर ब्लॉक ऑफ कैपिटल एम है ना, दिस इज 30 डिग्री and this wedge has a mass of 10 kg है ना. Now what we'll have to find out, we'll have to find out the force exerted by the wedge on 2 kg block. Force exerted by the block on by the wedge on 2 kg block. All right, have to find out the force exerted by the wedge on 2 kg block. Okay, anyways, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. What we'll have to do, simply sir, आपको पता है फिजिक्स प्रॉब्लम करने के लिए एफबीडी ड्रॉ करो. सिंपल है सर, एफबीडी ड्रॉ करो, है ना. तो यहाँ पर ये 30 डिग्री है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ मास एम 2 kg है. हमको निकालना है सर ये वेज इस 10 kg 2 kg वाला ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है. तो 2 kg का मैं एफबीडी बनाता हूँ. एफबीडी क्या लग रहा है सर, 10 सेंटी इस तरफ, एमजी नीचे. सो ये जो रिजोल्यूशन आएगा इस एमजी का रिजोल्यूशन क्या आएगा सर, ये 30 है. सो दिस इज 30, इट वुड बी एमजी cos 30. और ये जो नीचे लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा सर, mg sin 30. राइट. Okay, so what was the problem? There is a call came, so I'm sorry for the disturbance in between. So we have to find out the force exerted by the wedge on 2 kg block. All right, so यहाँ पर ये 2 kg block है, तो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स mg है सर, इस पे 10 सेंटी इस तरफ लगा रहा है. तो डेफिनेटली अगर 30 डिग्री है तो इस mg का रिजोल्यूशन बनेगा. इफ यू डोंट नो द रिजोल्यूशन ऑफ mg, ऑलवेज कैलकुलेट इट लाइक दिस, है ना. mg, why? Because mg is making an angle theta with the x-axis as well as y, so definitely it will be resolved, है ना. तो mg वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस पे mg को हमको रिजॉल्व करना है. और mg का रिजोल्यूशन हमेशा सर अगर ऐसा है तो mg अगर ऐसा है, ये सपोज यहाँ पर एक थीटा है, तो mg का रिजोल्यूशन हमेशा ऐसे बैठता है, ये हमेशा सही बैठता है. mg cos थीटा, दिस इज mg sin थीटा. अगर ऐसा है, सॉरी, अगर ऐसा है तो ये mg है, तो ये mg ऑलवेज डाउनवर्ड, बिकॉज mg का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ आर्ट होता है. इसका जो रिजोल्यूशन आएगा वो हमेशा ऐसे आता है. ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इट वुड बी ऑलवेज mg cos थीटा, इट वुड बी mg sin थीटा. आई होप यू नो दैट, राइट. तो यहाँ पर जो रिजोल्यूशन आएगा ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा सर mg cos 30. इट्स अ वेरी कॉमन रिजोल्यूशन इन मैकेनिक्स, सो यू हैव टू रिमेंबर इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर life. I mean not for the rest of your life, but at least till the NEET and JEE exam. All right, so ये हो गया सर mg sin 60, sorry sin 30. तो यहाँ पर and this normal, यहाँ पर there is a contact surface between 2 kg and the wedge, so definitely ये wedge जो है इस ब्लॉक पे इस तरफ ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. ऑलराइट, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा. तो उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा सर, दिस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग y. Why? बिकॉज ये ब्लॉक जो है अलोंग y कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है. सही समझ में आ रहा है सर. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द 2 kg block is nothing but the normal reaction, so that normal reaction must be equal to the opposite force acting on the wedge, that is nothing but mg cos 30. why? Because इस ब्लॉक पे लगने वाला f net has to be 0, इसीलिए तो ये ब्लॉक y के अलोंग मूव नहीं कर रहा है. because whenever there is some f net, that block start moving in that particular direction wherever there is an f net acting, राइट. बट यहाँ पर ब्लॉक चूंकि y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, और मैं वेक्टर पढ़ाते समय आपको बताया था हमेशा जब इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम करते हो, इस इंक्लिनेशन को आप x मान लो और परपेंडिकुलर डायरेक्शन को आप y मान लो, ये मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर अलोंग y जो है दिस ब्लॉक ऑफ मास m इज नॉट मूविंग, दैट मींस द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग अलोंग y मस्ट बी इक्वल इवन इफ दे आर ऑपोजिट. सो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन should be equal to mg cos 330, and that normal reaction is the force exerted by the wedge on the block of 2 kg mass. That's it. So normal reaction क्या निकल के आता है सर, mg cos 30 निकल के आता है. mass is nothing but 2 into g. cos 30 का वैल्यू कितना है सर, cos 30 का वैल्यू कितना आता है, √3/2. I hope you know that, and that answer comes out to be g √3 or √3g, whatever you want to name it as, or you can also write it as 10 √3 Newton, considering the value of g to be 10 approx. all right. okay, now यहाँ पर देखो, if the एक नया क्वेश्चन लेते हैं. I hope that question was relatively easy. You just had to understand the resolution of mg. all right. okay, यहाँ पर सपोज एक आपको एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जहां पर ये थीटा है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है,
ये कैपिटल मास m है, ऑलराइट। सो ये पूरा सिस्टम जो है, इफ मैं अगर बोलूं सर, इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन m ड्यू टू m, है ना। तो इफ द सिस्टम इज रिलीज, इफ द सिस्टम इज सिस्टम इज रिलीज्ड, सिस्टम इज रिलीज का मीनिंग देखो, अभी देखो सर, इस ब्लॉक ऑफ मास एम पे लगने वाला हमको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, तो सिस्टम इज रिलीज, अभी सुनो, सिस्टम इज रिलीज मतलब क्या है, इस सिस्टम को जो है मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया, क्या दे दिया सर, एक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दे दिया, समझ में आ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टम बीइंग रिलीज। अभी आपको पूछा गया सर फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन एम एंड ऑन एम, है ना, हमको क्या नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना है, देखो सर हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, इस ब्लॉक ऑफ मास एम पे लगने वाला एम जी, ये हो गया सर एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ लगने वाला फोर्स है एम जी साइन थीटा, और है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा, हमेशा अलोंग द नॉर्मल जो एम जी का कंपोनेंट आएगा वो हमेशा एम जी कॉस थीटा आएगा, उस बात को आप लिख के रखो, मोस्ट अब उस पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है हमेशा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज सेम। एनीवेज, तो यहाँ पर ये जो एम ए है, अभी देखो ये अगर पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ब्लॉक ऑफ मास एम भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से जा रहा होगा, ऑलराइट, समझ में आ रहा है सर, ओके। नाउ अगर ये ब्लॉक ऑफ मास एम पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो ये पूरा सिस्टम अगर वेज भी मूविंग विद एक्सेलरेशन है, तो अगर मैं नॉर्मल अब इस ब्लॉक ऑफ मास एम का मोशन बाय सीटिंग एट दी वेज देखूं, तो ये क्या हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया है। तो अगर एक नॉन इन, बिकॉज ये फ्रेम क्या है सर, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, अगर ये नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, सॉरी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो फिर यहां पर क्या आएगा सर, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स आएगा। तो हियर if the system is released, you cannot say कि सर normal reaction का वैल्यू जो है mg cos theta होगा, why, because this system entirely is moving with some acceleration a, that means this particular frame of reference is not a non-accelerating frame of reference, rather an accelerating frame of reference। अगर accelerating frame of reference हो तो हमेशा एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा उधर गिरता है, और सूडो फोर्स कैसे लगता है हमेशा सर, ब्लॉक ऑफ मास एम पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगने वाला फोर्स को क्या बोला जाता है सर, सूडो फोर्स बोला जाता है, दैट्स इट। तो इस ब्लॉक ऑफ मास एम पे लगने वाला सूडो फोर्स किस तरफ होगा सर, इस तरफ होगा, इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, है ना। तो ये क्या होगा सर, यहाँ पर इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, समझ में आ रहा है सर, ये होगा थीटा, तो ये हो गया आपका सर एम ए कॉस थीटा, और ये हो गया आपका एम ए साइन थीटा, ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा सर, एम ए साइन थीटा, समझ में आ रहा है सर, और ये हो जाएगा सर एम ए कॉस थीटा, ठीक है। तो अब मतलब देखो, अभी ये इस तरफ एम ए है, सो द फोर्स इज नथिंग बट मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो अगर ये देखोगे तो इस तरफ इस डायरेक्शन में एक आएगा, और इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में एक आएगा, तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा था, तो डेफिनेटली इट विल बी थीटा एज वेल, सॉरी इट विल बी थीटा एज वेल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर से, तो ये थीटा हो जाएगा, तो दैट वुड बी एम ए कॉस थीटा, और इट वुड बी एम ए साइन थीटा, जो यहाँ पर आया रेजोल्यूशन, है ना। तो यहाँ से मैं क्या इक्वेट कर सकता हूँ सर, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या निकल के आएगा, बिकॉज अगेन दिस ब्लॉक ऑफ मास एम इज इन इक्विलिब्रियम अलोंग वाई, तो यहाँ का जो इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा सर, नॉर्मल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, ऑलराइट, दैट्स इट, ओके। So this is the normal reaction acting on the block of mass m when the system is simply released. Okay, when the system is simply released. That's it. Okay. Anyways, ये आपका क्वेश्चन था, अच्छा वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रॉब्लम। फिर से सूडो फोर्स का एक क्वेश्चन करते हैं। सो यहाँ पर एक ब्लॉक ऑफ एक व्हील है, दिस व्हील इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए। यहाँ पर जो है एक जब एक पेंडुलम था, तो जब बॉडी एक्सेलरेट करने लगा, ये पेंडुलम यहाँ तक पहुंच गया, और इस थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। सो हियर आल्सो है ना, यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बॉब विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रॉली। अभी देख,
विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रॉली, मतलब ये ट्रॉली क्या हो गया सर, एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया। अगर ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम है मतलब यहाँ पर सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा और हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मतलब यहाँ जाके बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में आ गया, बिकॉज दिस बॉब कैन नॉट मूव फर्दर, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, है ना। तो ओके, तो इसका क्या बनाते हैं हम, एफबीडी बनाते हैं, है ना। तो एफबीडी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, बॉब है, ये क्या है सर, ये थीटा है, समझ में आ रहा है सर, ये क्या है सर, mg डाउनवर्ड। ये पूरा सिस्टम अभी देखो, विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली पूछा है, और ये ट्रॉली क्या है सर, एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। अगर एक्सेलरेटिंग है तो एक सुडो फोर्स आएगा, इस बॉडी पे सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सुडो फोर्स कैसे लगता है सर, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, वो कितना होता है सर, ma होता है। दैट्स इट, ऑलराइट, ओके। एनीवेज अभी हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से सर रिजॉल्व करो, ये mg है, ये थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ये हो गया सर mg cos थीटा, और ये हो गया सर mg sin थीटा, ऑलराइट। और ये ma का फिर से रिजोल्यूशन आएगा सर, फिर से सेम सिमिलरली ma का भी दो रिजोल्यूशन आएगा इन दिस डायरेक्शन। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया सर, ma cos थीटा, और ये हो जाएगा सर ma sin थीटा, ऑलराइट। और यहाँ पर टेंशन t लग रहा है, ओके। टेंशन t तो हमेशा लगेगा। सो फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट व्हाट आई कैन फिगर आउट इज, ये जो पूरा सिस्टम है, this bob has a tendency to move in this direction with an acceleration a dash now. So अभी हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे सर, ma dash must be equal to mg sin theta minus ma cos theta. That's it. तो आंसर क्या निकल के आता है, mm got cancelled out, a dash क्या निकल के आ गया सर, g sin theta minus a cos theta. That's it. So this is the acceleration with which this is the acceleration at the maximum deflection with respect to trolley, है ना। तो सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया। प्लीज मेक श्योर यू मेक दिस डायग्राम नीट एंड क्लियर। टेंशन टी इस तरफ लग रहा है, mg इस तरफ लग रहा है, तो mg का पहले आप रिजोल्व करो, है ना। तो ये जाके ये थीटा था, तो फ्रॉम द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट ये भी थीटा होगा, तो ये हो गया सर mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा। अगर मैं सुडो फोर्स का रिजोल्यूशन ड्रॉ करूं तो यहाँ पर सर ma लगेगा, है ना। तो ma का भी दो कंपोनेंट आएगा, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग, सही है। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सही है। तो दिस इज ma cos थीटा, दिस इज ma sin थीटा, दैट्स इट, ओके। हाँ, सो दिस इज द एक्चुअल डायग्राम, इसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। दिस इज टेंशन टी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस even though it looks quite clumsy. Anyways, okay, I hope so we'll just solve just two more problems for tonight. Okay, अभी हम लोग अगर लेंगे कि सर फाइंड आउट द एक्सेलरेटर सिस्टम एंड द टेंशन T, ये एक यहाँ पर 5 kg ब्लॉक है, 5 kg ब्लॉक, यहाँ पर एक 10 kg ब्लॉक है, यहाँ पर लगने वाला फोर्स जो है वो 50 न्यूटन है, और इट इज एट एन एंगल, एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल पे लगा हुआ है। तो we'll have to find out the acceleration of the system and also टेंशन T जो इन दोनों ब्लॉक के बीच में लग रहा है। तो ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या निकल के आ गया सर, दैट्स इट। पहले पूरा सिस्टम को आप consider them to be single mass 10 kg plus 5 kg because ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, मेसिव रोप नहीं है, so 10 kg plus 5 kg would be nothing but 15 kg। तो 15 kg पे लगने वाला फोर्सेस क्या क्या है सर, ये जो 50 डिग्री, जो 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दिस 50 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा 30 डिग्री, ऑलराइट। तो ये क्या हो जाएगा सर 50 cos 30, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा 50 sin 30, राइट। 50 cos 30 एंड 50 sin 30। अभी देख, अभी मैं अगर आपको सॉल्व करूं, यहां पर 5 kg ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो टेंशन टी आगे की तरफ, और इस 5 kg ब्लॉक को आगे लेके जाने वाला फोर्स जो है वो टेंशन टी है, तो टेंशन टी शुड बी इक्वल टू 5a। क्वेश्चन 1, अगर 10 kg ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊं, आगे की तरफ 50 cos 30, पीछे की तरफ टेंशन T और एक्सेलरेशन A आगे की तरफ, सो आंसर जो निकल के आएगा वो 50 cos 30 माइनस टेंशन T शुड बी इक्वल टू 10 into A, ऑलराइट, 10 into A, सही है, यस। तो यहाँ पर जो टेंशन T का वैल्यू है वो है 5A, सो 50 cos 30 इज नथिंग बट √3/2, ऑलराइट, √3/2
minus 5a 10a, तो ये निकल के आता है सर 50 इंटू रूट 3/2 शुड बी इक्वल टू 15a, तो ये 25 और 5 तो ये आंसर आया 5√3/3 is acceleration a. All right, so this is the acceleration of the system. Acceleration of the system क्या निकल के आ गया सर? a 5√3/3 मतलब 3 is √3 got cancelled out, so answer should be 5/√3 if my calculations are not wrong. अगर calculations कहीं पर गलत हो रहा है तो please I mean forgive me for that. All right. Okay, anyways, if I got the acceleration of a, then I can definitely find out the value of tension T here by putting the value of acceleration here. That's it, simple. Okay, so the only thing that you have to learn from this particular problem was to resolve the 50 Newton force. Okay, इसका resolution आपका आना चाहिए. That's it. Okay, anyways. Okay, तो मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ. But in this particular homework, I think friction would be involved. So let's not solve that question for tonight. In the next lecture, I think I would start with friction. Okay. I hope you'll enjoy this lecture. So tomorrow you'll be receiving the lecture for tension. Okay. I mean, sorry, friction. So let's wait for that. And please do go through this video properly and try and understand everything explained in this problem. So we have tried our best to use almost all the concepts that we have learned till now in this particular chapter. And tomorrow we are starting up with friction. And after that, again, you will be receiving many problems, solved examples, video lectures or live classes. Anyways, thank you.